Alright, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DSG webinar series का आगाज है and the highly anticipated session is here. And yes, we are talking about today's that webinar that we had selected, and that was the topic solar energy, past, present, and future. हम पहले भी DSG के platform से we have been doing some engaging seminars, just taking people on board, asking them that what they believe about renewable energy और किस तरह हम stimulate कर सकते हैं in Pakistani society. We have recently had floods in Pakistan, or it was very interesting to see UN top leadership in Pakistan today visiting those flood areas or declaring कि किस तरह us not shifting onto renewable energy has affected less developed countries like Pakistan. So आज का topic भी हमारा वही था. We were thinking about how about having a discussion upon how renewable energy can bring in the right way forward. And when I say right way forward, I mean किस तरह से हम past, present, and future को combine कर सकते हैं, what we foresee. So I'm glad today we have a dynamic team today. With us is Zainul Abdeen. Zan is our Chief Operations Officer. Welcome, Zan. Thank you so much. It is an absolute pleasure being here. I'm very excited for this webinar series. I hope we have a lot more. And definitely the topic we have today is very interesting. So I hope our viewers will have a very good time listening to us. Hopefully. Thank you very much. And with us is also Nadifa. Nadifa is our Chief Marketing Officer and is in charge of all PR, business development, marketing, and all the amazing stuff that you do. And this webinar series is part of the same working. So welcome, Nadifa. Assalamu alaikum, and I am really glad to be part of the very first DSG webinars, and I hope that as we have seen the success of DSG Talks, so inshallah this webinar series will also be full of all the information and very fruitful for the audience. All right, wonderful. And with us is also Asad Kamal. Asad Kamal is our National Sales Manager, and he is the one who is involved in talking to customers, identifying क्या वो चीजें हैं लोग किस तरह से बोलते हैं. Welcome, Asad, as well. Assalamu alaikum. Thank you very much, and it's my pleasure to be the part of the first episode of the webinar series. Or inshallah, we will try our best to communicate and give information with the best of our knowledge. Okay, that's wonderful. Okay, guys. First of all, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा introduction हमारे आज के speakers का हो. I've already talked about what these three guys are doing right now, but I'll briefly ask everyone to just quickly introduce themselves a bit. और अपना keynote यानी कि अपने thoughts on the topic today, that is past, present, and future देने से पहले, which they can take. They will take at least 2 to 3 minutes introducing the topic. If you would like to briefly introduce yourself, that'll be great also. ताकि आप थोड़ा सा अपने वाले से बताइए. We should also know that what you guys have been in through. So I'll start with Zan. Zan, over to you. The floor is yours. Thank you very much for the floor. So my name is Zainul Abdeen, and I've been working in the renewable energy sector since the past 8-9 years. It's been an amazing journey till now. So I've seen जब से पाकिस्तान में solar पहली बार लगना शुरू हुआ था, आज से कायद-ए-आज़म solar was one of the major projects जहाँ से पाकिस्तान ने आगाज लिया था. उसके बाद that project was a kind of a flag bearer for Pakistan, और उसके बाद फिर जो है वो projects commercial, industrial और residential base में शुरू हुए थे. So practically seen the past, और I think past से अभी तक since the present that we are right now. So there has been a lot of development, and we see a lot of development coming in the future as well. But we definitely need to relate this topic, जिस तरह से दानियाल साहब ने बताया कि we need to relate it to the environment as well. The kind of flash floods that we are receiving, unfortunately, Pakistan is less than 1% of the contributor of carbon emissions of the world. But yet again, we are standing at the 5th most affected country worldwide when it comes to climate change. So regardless of the fact that we are doing our part, I think the whole world needs to pitch in and do something for the future. So for the past and the present, I believe there's been a lot of development, but for the future, we really need to look forward towards renewable energy. All right, wonderful. Zan, Nazifa, I'd like to hear it from you, a bit of introduction, and what do you think about today's topic, solar energy, past, present, and future? But I think मुझसे ज़्यादा शायद solar energy के बारे में on social media पे बात नहीं करता.
So hopefully the audience that is looking, they have seen me in many sessions during the DSG talks and other discussions, and or obviously talking with our customers also. One thing that would I would like to mention, ये कि awareness पहले शायद solar और renewables के बारे में इतनी ज़्यादा नहीं थी, but now people know about it. And I think such initiatives, जैसे हम webinars और talks और इस तरह की working करते हैं, so हम बेसिकली अपने कस्टमर को एम्पावर कर रहे हैं, अपनी ऑडियंस को एम्पावर कर रहे हैं. सो वो हमसे फिर आगे से क्वेश्चन और वर्किंग भी उसी तरह से करते हैं. Yes, the past had to be progressive, और प्रेजेंट में अभी we are doing a lot of good stuff in industries and all. लेकिन अगेन जब फ्यूचर की बात करें तो आई थिंक देर इज़ अ वेरी ह्यूज पोटेंशियल स्टिल प्रेजेंट इन पाकिस्तान, जिसमें हमारे ऑल सेक्टर्स इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और रेजिडेंशियल सब के सब जो है वो इस अपॉर्चुनिटी को टैप कर सकते हैं. और आजकल का जो एक बहुत बड़ा मौजू है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का, आई थिंक दिस मंथ हैज़ गिवन दी हेफ्टी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और हार्ट अटैक्स टू ऑल द रेजिडेंशियल कंज्यूमर स्पेशली. सो आई थिंक उससे हम एनर्जी इंडिपेंडेंट होके बाय ऑप्टिंग सोलर ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं. All right, wonderful. Asad, why renewable energy as a career to be start? मैं बड़ा quick सा मेरा सवाल है. A lot of people ask this question. मैं topic से थोड़ा हट के बात कर रहा हूँ, but I want to know a bit of your background as well. Where did you study and why did you actually ended up in renewable energy? Was this a passion? How did it come up? Well, बड़ा relative question है मेरे वाले से. I started my career in 2014 after passing my electrical engineering from UET Taxila. So उसके बाद straight away I started my career in renewable energy, solar energy firm में as a sales engineer मैंने अपना career start किया. So at that time एक बड़ी excited मैं ज़रूर था कि ये उस वक्त बहुत एक नई फील्ड थी और लोगों को बहुत ज़्यादा awareness नहीं थी. ये मैं बात करूँ आज से 8-9 साल पहले की. तो when I entered into the field और स्पेशली वो भी सेल्स में, तो आप कह लें कि वो एक पहाड़ था मेरे सामने, बिकॉज लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, इसके फ़ायदे लोग ऑब्वियसली रियलाइज़ नहीं कर पाते थे. कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, इतने ज़्यादा इक्विपमेंट में भी डेवलपमेंट नहीं थी. तो मतलब उस वक्त जो है वो सोलर को स्पेशली बेचना बहुत ही मुश्किल काम था. और लेकिन उस टाइम पे मुझे ये है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अवेयरनेस आती चली गई. एंड बाय दैट टाइम अगर मैं आज की डेट तक बात करूं तो अब बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर गया है सोलर का कल्चर और लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है. और अब उस टाइम के मुकाबले में अगर मैं आज के दिन को कंपेयर करूं तो डेफिनेटली मार्केट को अप्रोच करना बहुत आसान है. उसकी वजह ये कि एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट बन चुका है सोलर. अब ये कि इसके फ़ायदे भी लोगों ने प्रैक्टिकली देख लिए हैं और ये लोगों ने इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया कि ऑब्वियसली ये इसके बगैर अब हमारा गुजारा नहीं है और फ्यूचर इसी के साथ है. बट स्टिल जैसे कि नजीफा ने बताया कि देर इज अ स्टिल लोगों ने इसको थेरेटिकली तो ज़रूर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन प्रैक्टिकली स्टिल देर इज अ बिग मार्केट विच इज़ अनटैप्ड. और अभी भी पाकिस्तान में इतना बड़ा पोटेंशियल है कि लोग इसको जिस हिसाब से एक्सेप्ट कर चुके हैं अभी भी उस हिसाब से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ. सो आने वाले टाइम में तकरीबन आने वाले और 5 साल 10 साल में हम समझते हैं कि पाकिस्तान में इज़ अ बिग मार्केट और इसकी जो ग्रोथ है स्पेशली इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी भी और इन टर्म्स ऑफ इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी, वो हमें जो है एक रीजनेबल सब्सटेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी. All right, that's wonderful. For all the people who have joined us today, there are a lot of people who want to ask any questions to these three amazing, dynamic individuals. We call them solar gurus, by the way, and they're experts in handling your requirements, your working. तो मैं जहाँ इनसे बात भी करूंगा उसके साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो आज का बड़ा मेन टॉपिक होंगे. And where are we heading? So Zain, my first question to you is very quickly. Electricity prices ने चीखें निकलवा दी हैं. July, August, people don't know about it, but they don't know how to decode their bill. फिर हम कुछ लोगों को बताते हैं कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स क्या होती है, तो हमने प्राइसेस क्यों बढ़ा दी हैं. What has Ukraine and Russia done to us? What is happening around? So सबसे पहले मुझे बताइए. The question is on the screen. Solar energy. Where are we heading? The floor is yours. So I believe we're heading into a time where renewable energy, putting renewable energy into the mix is not even a question. It is something that is absolutely necessary right now. If you look into the tariff for the past few years, अगर देखें आज से अगर कोई 10 साल पहले लीजर टैरिफ जो है हाफ से भी कम था. 10 और 15 रुपए के काफ़ी टाइम जो है टैरिफ ठहरा है. उसके बाद रेजिडेंशियल के लिए we can see the tariff was something like standing near 16 to 21 rupees. Currently, the tariffs are standing at off-peak 25 and 31 rupees. So with taxes, this makes around 35, 36 rupees का एक यूनिट जो है रेजिडेंशियल यूनिट जो है पड़ जाता है.
So now considering, I believe renewable energy or solar and putting solar energy into the mix is practically a no-brainer. So looking forward to things, I believe the industry is already moving towards solar. There we have seen a lot of growth in the residential sector as well. So looking on to the future, I believe residential may, especially given the fact that net metering has been involved and net metering has been included into the residential sector. And I believe NEPRA has taken a lot of amazing steps for the business community as well. So we'll be seeing a lot of a lot better, a lot more developments in the industrial sector as well. So especially considering large scale solar power plants, IPPs, where renewable energy will definitely have a huge impact, not only on the environment wise, but definitely on the cost of electricity as well. It will have a huge impact of lowering the cost of electricity, and especially given the fact that CTBCM is coming into play. So we'll be seeing a lot more solar power plants, or in that case, renewable energy power plants coming into the mix into Pakistan. That's a very wonderful idea. हम एक पूरा session करने वाले हैं CTBCM पे. This is amazing. So if people want to know in the energy sector, what's the next big thing? पाकिस्तान में next बड़ा सबसे क्या होने वाला है? I believe CTBCM is answer. A lot of people are asking questions. We have a lot of people joining in. Maliha Samini is also with us. Zia Nazar, Rashid Khalid. There's an amazing numbers. I'm looking people who are online right now at various platforms of DSG. मेरा जो सवाल है जी वो असद से है. Zia Nazar has this question. Asad, Zia is asking, we know the benefits and need of solar energy, but what are, or if there are any disadvantages of domestic solar system in Pakistan? So just few comments on this. देखें, जैसा कि हमने अपने स्टार्ट में बात की कि इस वक्त एनर्जी की प्राइसेस जो हैं जो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं और सब लोग बिजली के जो बिल्स को लेके बहुत ज़्यादा तंग है. लेकिन अगर हम अपने सराउंडिंग्स में देखें, जिनके घर सोलर लगा हुआ है या पिछले 1-2 सालों से सोलर लगा हुआ है, वो तो बिल्कुल तंग नहीं है. दे आर एब्सोल्युटली फाइन बिकॉज उनको तो बिल आ ही नहीं रहा. दे हैव इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग टर्म फॉर देयर नेक्स्ट जनरेशंस. और उन्हीं को देखते हुए हमें ये अंदाजा होता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो डोमेस्टिक क्लाइंट्स हैं ऑब्वियसली, जिनके अभी भी बिल्स जो है वो नेगेटिव्स में है, जीरो में है. सो मेरे ख्याल से डोमेस्टिक में इसका बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि नेट मीटरिंग की एक ऐसी आप कह लें कि सहूलत हमारी गवर्नमेंट ने दी हुई है जो कि एक्चुअली आपको बिल फ्री कर देती है. डोमेस्टिक में तो 100% बिल फ्री कर देती है आपको. सो जी. So that's a similar question. मैं साथ साथ ऐसे because of time shortage की वजह से questions भी करूँगा. Amir is asking, how does net metering returns work? Is it units consumption or unit rate is adjusted? How does net metering works? By the way, अगर मैं I'm an owner of a house and I have rooftop available, so how does net metering works? Very quick comments on this. So what WAPDA does is कि आपको यूनिट्स को हमेशा वो कंजम्पशन के अगेंस्ट एडजस्ट करते हैं. So whatever you are consuming, you are exporting, you will get it adjusted at the end. उसमें ये है कि obviously क्योंकि घरों का ज़्यादा लोड होता है रात के टाइम और सोलर की प्रोडक्शन होती है दिन के टाइम. तो दिन के टाइम जो आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं वो रात के टाइम जितनी आपकी कंजम्पशन होती है वो नेट ऑफ होके एंड पे आपको बिल जो है वो चार्ज होता है. Okay, I think that's very much evident. Thank you very much for the net metering for the working. अच्छा, एक और बहुत important topic है, and that is climate change. I remember very recently I was in Austria and I met few people and all they talk about Pakistan is climate change, climate crisis, floods coming, और उसका evident जो था वो floods was here as well. Nazifa, आपका क्या ख्याल है? What do you think? हमारी एज अ नेशन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स एनर्जी क्राइसिस? तो चले एक चीज है, लेकिन क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट होना इज नो मोर एन ऑप्शन, इट्स एक्चुअली अ कंपल्शन एज अ नेशन. व्हाट डू यू थिंक? एग्जैक्टली. आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हम शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते. हम अपने डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके थ्रू हम क्लाइमेट चेंज और इससे सारी चीज़ों से रिलेटेड अवेयरनेस वर्किंग कहते हैं कि हाउ वी कैन मेक थिंग्स बेटर. इट्स जस्ट नॉट लाइक एक एनर्जी ही एक ऐसा फैक्टर नहीं है कि जिसके अंदर ऑब्वियसली आप क्लाइमेट को जो है फ़ायदा दे रहे हैं. बिकॉज जब आप इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, अभी रिसेंटली वी हैड a case study with Sapphire ने हमारे साथ 5 मेगावाट का प्लांट लगाया एंड वी केम टू नो दैट विद इन फ्यू मंथ्स उन्होंने अपने जो गैस जेनसेट्स हैं वो बंद कर दिए. सो ऑब्वियसली एक जो शिफ्ट होता है फ्रॉम अ सोर्स ऑफ एनर्जी जो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन का बायस बनती है, और उसके बदले में जो है वो आप एक सोलर सिस्टम लगाते हैं जिससे बेसिकली आपको फ़ायदा है. एंड देयर इज़ नो
सच emissions जो आपके क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाती है, तो वो जो मेजर एक इंडस्ट्रियल वर्किंग है उसके अंदर तो बहुत बेनिफिशियल है। बट अगेन साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो शायद लोगों को आइडिया नहीं होता, जो कि एक सोलर सिस्टम लगाने से एसोसिएटेड होते हैं, बिकॉज इंस्टॉलिंग अ सोलर सिस्टम इज इक्वल टू एन एक्स अमाउंट ऑफ हैविंग ट्रीज प्लांटेशन एंड ऑब्वियसली हैविंग एन एक्स अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, रिडक्शन। तो आप इनडायरेक्टली उस चीज को जो है वो बेनिफिट आउट कर रहे होते हैं। नहीं, I absolutely agree with this. मगर बिल्कुल आपने सही कहा कि एज अ नेशन भी हमारी ये बड़ी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है that we talk about it. अच्छा जी, जहाँ हम we were talking about different sort of working, और हम जहाँ एक ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंडस्ट्रीज की भी वर्किंग है कि वो इंडस्ट्रीज किस अंदाज में अपनी वर्किंग को देखती हैं. हाउ डू दे कम अप एंड हाउ डू दे सी द वर्किंग. On the screen, perhaps if you guys can look at, is one of the industries which has gone solar. So I would like Asad, if you can see on the screen, आप industries को solarize करवाते हैं. Tell me a bit more about this project. Can you see it on the screen, by the way? Ji. Yes. So tell me a bit about it. The project we are looking at is basically a 5 megawatt project at Sapphire Textile Mills Limited at Feroz Watman Shekhupura. So Sapphire Textile, जैसा कि किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, one of the biggest textile groups in Pakistan. एंड इनकी जो इंडस्ट्री है, इस पे हमने अभी रिसेंटली ये 5 मेगावाट का जो है वो प्लांट जो है वो लगाया है. सो सफायर ने ऑल टुगेदर लाइक अदर बिग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैव डिसाइडेड टू गो सोलर, और उन्होंने अपने तमाम जो प्लांट्स हैं उनको उन्होंने सोलराइज करने का जो है वो फैसला किया है. और उसकी बुनियादी वजह यही है कि ऑब्वियसली इस एनर्जी क्राइसिस से निकलने के लिए और अपनी जो है ओवरऑल ऑपरेशंस को मज़ीद उन्होंने बेहतर बनाने के लिए इस डिसीजन को ऑप्ट किया. सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये प्रोजेक्ट जो है वो बड़े अच्छे तरीके से डिलीवर किया. इट्स अप एंड रनिंग, और इसके अलावा इनकी और इस जो है मल्टीपल साइट्स हैं जिस पे अभी इंस्टॉलेशंस हो रही हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द उनकी भी पिक्चर्स इसी तरह हम देखेंगे. All right, wonderful. Such an amazing. मैं तो अपने आप को उस कैटेगरी में नहीं लाता. डायनामिक तो ये तीन है, लेकिन ये तीन अमेजिंग स्पीकर्स हैं. एंड एट द बैक इज 5.1 megawatt solar power plant. What better beautiful picture than this? Zainul Abidin, there are lots of questions coming in. Sanna Shahid is asking, do you think our government policies will keep supporting renewable energy installations in Pakistan? Yes, no, what do you think about it? Yes, definitely. I think the government has some amazing plans for renewable energy in Pakistan. कुछ अच्छे टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट्स भी लग रहे हैं. कुछ हम डैम्स के रिजर्वायर्स के ऊपर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स के बारे में आपने सुना होगा. Sindh में there's a huge project coming up on a river as well. And definitely the government is definitely supporting into this, especially given the fact that State Bank's renewable energy scheme is there, which provides a loan up to 6%, which is an amazing scheme. I think everybody who is in the finance would know that this is practically a no-brainer when it comes to a project being financed on 6%, and definitely when the returns are under 4 years. आज के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो अंडर 4 years हम एक स्टैटिक पे बैक जो है कैलकुलेट करते हैं. बट गिवन द फैक्ट द टैरिफ इज राइजिंग, जिस तरह से टैरिफ राइज कर रहा है, आई थिंक द पे बैक, डायनामिक पे बैक जो एक्चुअली एक प्रोजेक्ट का आ जाता है वो 2.5 से 3 साल तक मैक्सिमम आ जाता है. So especially considering the steps that NEPRA has taken, the IGCEP and the CTBCM, I believe we'll see an amazing revolution in the Pakistani renewable energy sector in the coming 10 years, inshallah. Achha, Zain, next question is directly to you because it comes from Rashid Khalid and a very, very important topic. आजकल हम जहाँ भी जाते हैं यही सवाल हमसे होता है, यार import बंद है, import ban है, and something, a topic which is very, very close to my heart as well. Why don't we have local manufacturing of panels? Or is there any chance to have foreign direct investment in that? A very, very important question coming in from a very knowledgeable person. So, Zain sir, manufacturing क्यों नहीं होती पाकिस्तान में? First of all, Rashid Saab, Assalamu alaikum, sir. Sir, thank you very much for asking the question. I am honored to answer this to you as well. Sir, I believe Pakistan में अभी तक जो demand है वो globally meet करने वाली नहीं है. Definitely, the demand in Pakistan is very low right now. Especially considering the fact that the government has given zero customs duty on the solar panels. So it is very viable to import solar panels into Pakistan rather than manufacturing here in Pakistan.
So I personally believe, the day that the Pakistani government puts duties on the customs, I think that will push everybody, all the giants in Pakistan, to start investing into local manufacturing. And sir, I don't believe there is a demand for a foreign direct investment for manufacturing of solar panels. I think we have Pakistanis have a lot of funds, especially businessmen in Pakistan, who are already very keen and very ready to do this in Pakistan. But I believe the way forward is very simple. The government puts up custom duties on imports of solar panels, and then very few, or maybe a handful of businessmen come up and start putting up solar power plants with joint ventures with the big five, such as Canadian Solar, JA Solar, Jinko Solar, and some of the major manufacturers. So those can be manufactured here in Pakistan, and definitely to meet the demand of the production, it is very viable to export solar panels from Pakistan to the MENA region and to the European region as well. Okay, I think it's a very, very important question. Coming to Nazifa, industries, आप बहुत सारी industries के साथ discussion होती हैं. You're talking to a lot of agencies who are working into this sector. What do you actually think? Where are we heading? Now, that's a very, very important question as well. हम कहाँ जा रहे हैं? What is the future? What do you think for this particular sector, renewables? Number one. Number two, मेरा एक important सवाल है. A lot of people who are joining on this platform, I can see right now we have around 120 people watching us. Females के लिए, for females, how is this career? थोड़ा सा off topic हूँ, but I always talk about it because हम काफी gender inclusiveness की बात करते हैं in this organization, and we talk about how it is very important for us to be gender inclusive. Just wanted to ask a question: how is this career for all the young dynamic females who are watching out there who consider you ideal? आपका इस हवाले से क्या ख्याल है? Okay, so firstly, I'll answer the question of having a career in this field. So definitely, जब engineering से related field की बात करते हैं, so it sounds a little bit tough कि obviously अगर एक खातून है तो वो sites पे कैसे जाएंगी या working कैसे करेंगी. But I think in given circumstances, and it is not just with our company DSG Energy, but I have also seen many other companies like that कि जिनके अंदर आजकल बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है on females working in every department. बी इट सेल्स, बी इट प्रोजेक्ट्स, आप साइट पे भी जा सकती हैं, आप साइट के ऊपर जाके इंस्टॉलेशन को मॉनिटर भी कर सकती हैं. यू कैन बी अ प्रोजेक्ट मैनेजर. आई थिंक यू जस्ट हैव टू हैव दैट पैशन. So I am myself an electrical engineer, and when I started my career after a break, so I joined as the position of project engineer. So I have been to all the you can say surveys. मैंने इवन छतें भी जाके उनके ऊपर सर्विस किया है, जाके वर्किंग देखी है. सो अगर इट कम्स फ्रॉम इनसाइड एंड यू आर पैशनेट एनफ, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी एक्सक्यूजेज और हर्डल्स जो हैं वो हो सकते हैं. करंटली आई थिंक वैसे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फैक्टर है, बट इन रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री एंड कैटेगोरिकली अगर हम सोलर की बात करें तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा जॉब मार्केट अवेलेबल है. अगर आप उसको सही तरीके से टैप करें और आप अपनी सीवी और अपनी चीज़ों को जो है वो प्रॉपर्ली अलाइन करें. लिंक्डइन इस टाइम जो है इट इज़ full of all the opportunities, and it is not just DSG Energy, but there are many solar energy companies. और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी इंजीनियरिंग कंपनीज हैं जिसके अंदर आप इस वर्किंग को देख सकते हैं, बिकॉज सोलर इज बेसिकली द फ्यूचर. आई थिंक अभी हमने शायद 5 to 10% भी जो पाकिस्तान की मार्केट है उसको टैप नहीं किया इन टर्म्स ऑफ सोलर. इट इज़ नॉट जस्ट रेजिडेंशियल, इट इज़ इंडस्ट्रियल बेस्ड ऑल्सो. उसी के साथ हमारे पास बहुत सारी कंपनीज भी हैं, और ऑब्वियसली जब भी कोई कंपनी डेवलप होती है तो बहुत सारी जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं. येस, देयर इज स्टिल बहुत गैप जिसके अंदर हमारे पास मेल टू फीमेल की जो रेशो है इन दी इंजीनियरिंग जॉब्स वो अभी काफ़ी डिफरेंस है उसमें. बट आई थिंक कि वो जब हम ही स्टेप आउट करेंगे तो वो बहुत बेहतर होगा. व्हेन आई जॉइन DSG Energy, आई वाज द ओनली फीमेल, बट राइट नाउ वी हैव 5 to 10 फीमेल्स वर्किंग इन दी साइट, वर्किंग इन सेल्स, वर्किंग इन बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. तो मेरा ख्याल है इस चीज़ को हम ही चेंज कर सकते हैं और हम ही इसको डेवलप कर सकते हैं. Wonderful, Ji. This is great to have gender inclusiveness, which is of course very important part of DSG. Asad, एक बड़ा अहम सवाल है. A lot of people are talking about it, and that is there are some news right now, in fact, going on. मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ. आदिल गफार का बड़ा अच्छा सवाल है. वही पूछना चाह रहे हैं. What he's asking is कि नेपरा में फीड इन टैरिफ जो नेट मीटरिंग के हवाले से उस पर डिस्कशन हो रही है. And we already know about it, that's a topic under discussion. पूरी दुनिया में, by the way, just to share, Adil, कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ नेट होते हो यूनिट्स. इट्स एक्चुअली फीड इन टैरिफ का कॉन्सेप्ट होता है. यानी अगर आप 22 रुपए की बिजली परचेज करेंगे तो जो आप
गवर्नमेंट को दे रहे होंगे वो 10 रुपए की होगी, उसकी एक लॉजिकल और फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग है। उन लोगों को छोड़ के जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, वो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ये है कि गवर्नमेंट ने बिजली बनाई, ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई, खंबे बिछाए, ट्रांसफार्मर्स, एनटीडीसी, दो सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व। उसके बाद आप तक के घर तक बिजली पहुंचाई और आपने छत पे सिर्फ एक सोलर पैनल लगाया एंड यू फीड इट बैक अंडर टैरिफ। ये ख्वाहिश तो हो सकती है, दिस कैन बी वन ऑफ दोस थिंग्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कि आप वापस बिजली को सेम रेट्स पे करें, लेकिन देन यू आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड। तो असद, आपका क्या ख्याल है? देयर इज अ डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक कि जी रिवर्स नेट मीटरिंग के जो यूनिट्स हैं उसको एडजस्ट करना चाहिए। वी आर आल्सो इन्फॉर्मिंग ऑलरेडी आवर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स कि ये हो सकता है। व्हाट आर योर थॉट्स? और ये होना तो नहीं चाहिए, वी डेफिनेटली अंडरस्टैंड टू कंट्रोल। या व्हाट आर योर थॉट्स? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि अभी करंटली वही बात है कि वी आर फॉर्चुनेट इनफ जो सोलर लगा रहे हैं कि जिनको पूरा यूनिट के अगेंस्ट यूनिट जो है वो एडजस्टमेंट मिलती है। बट ऑब्वियसली एक टाइम ऐसा आएगा अगर सोलर की इतनी ज़्यादा इंस्टॉलेशंस हो जाती हैं और मतलब हर कोई इसको ऑप्ट करता है और ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स शुरू हो जाती हैं, तो अ टाइम कैन कम जहाँ पे ऑब्वियसली जो नेपरा है वो इस किस्म की रेगुलेशन कर सकते हैं कि दे विल सेट सम सर्टेन परसेंटेज कि रादर देन नेट यूनिट टू यूनिट की बजाय कुछ सर्टेन परसेंटेज मे बी 50% और व्हाटसोएवर जो है वो उसकी हो। सो देयर इज अ चांस कि ये आने वाले फ्यूचर, नॉट इन द नियर फ्यूचर बट ऑब्वियसली आने वाले टाइम में ये बिल्कुल हो सकता है। Alright जी, Zain, coming towards your points, industries को क्यों solar पे shift होना चाहिए? Why they should be shifting on solar? You have done, your teams have converted hundreds of industries on solar. Why it is a no-brainer for an industrial owner, especially in context to financing schemes? So there are two things I'd like to highlight here. वो वाली industries जिनका operational expenses or electricity consumption is at least around 20, 25 or even 30% of the whole operational expense. And I believe that is a huge amount when it comes to the whole operational expense of an industry. So even if it is 20%, I believe if that can be further reduced to 15% or 12%, 20-30% वो भी reduce कर लें, तो I believe this is something that can have huge amazing savings. मैं एक मिसाल देना चाहूँगा अभी recently, the dairy sector, जिनका टैरिफ जो है आजकल जो है वो 35, 37, 40 रुपीज तक जा चुका है. So we've all seen, I believe, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं आपने देखा होगा डेयरी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस जो है बहुत तेजी से जो है बढ़ रही है. So that has उसी का एक जो एनर्जी का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो इस सेक्टर के ऊपर आया. So this is a very basic you could say explanation of the whole ongoing thing of the energy crisis, especially impacting the industries. इंडस्ट्री को इम्पैक्ट पड़ता है, डेफिनेटली वो सारा इम्पैक्ट फिर उस इंडस्ट्री पे ही नहीं जाता, वो चीज ट्रिकल डाउन होकर वो एंड कंज्यूमर के ऊपर आती है और एंड कंज्यूमर विल बी पेइंग द फाइनल यू कुड से जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे सारा बर्डन जो है एंड कंज्यूमर के ऊपर आता है. सो इट इज अ नो ब्रेनर व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्रीज गोइंग ऑन टू सोलर राइट नाउ. मे बी जब यूनिट 15-16 रुपए का 14 रुपए का होता था और गैस आपको 6-6.5 रुपए पर यूनिट पे मिल रही होती थी, तो कंपैरिजन सोलर के साथ जाता था 7-8 साल के ऊपर. इट वाज आई बिलीव इट वाज नॉट वाइबल एट दैट टाइम, बट स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट गिवन द क्लाइमेट चेंज इफेक्ट, given the fact that gas is readily not available for industries for production, and industries have to meet a certain target to stay above the baseline. So I think it is very important to move towards renewable energy. Putting solar into the energy mix basically reduces the localized cost of electricity. So that definitely impacts the whole operational expense and further will definitely impact the cost of the products that they are producing. All right, that's wonderful. That's the right question. असद, जब हम एक बहुत important बात renewables के अंदर और solar की field के अंदर करते हैं, a very important question also lies in जो domestic हमारे customers हैं, बहुत सारे वो लोग ये भी बात पूछते हैं, what's the payback like? Industrial owners भी पूछते हैं. So can you please comment what are the paybacks like right now for solar? All right, while we are trying to get Asad back with connectivity, Zain, your quick thoughts and your comments upon this. What's the payback right now for renewables or for solar? Sir, payback जो है आजकल अगर हम की बात करें, I believe Asad is back. Asad, you want to answer the question? Asad, can you hear us? जी, I can hear. All right, the question right now is payback of solar. ये solar की investment कितने अर्से में पूरी होती है? What's an ROI?
सोलर का जो ROI है, वो अगर हम नियर पास्ट में देखें तो वो तो कम से कम तर होता चला जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आज से जिन्होंने साल पहले अपना ROI 4 साल पे कैलकुलेट किया था, तो एक्चुअली वी आर रिप्लेसिंग वापडा यूनिट बाय इन्वेस्टिंग इन सोलर। तो वापडा का यूनिट जो कि बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, तो जिन लोगों ने अपने 4 साढ़े 4 साल पे कैलकुलेट किए थे जो पे बैक्स हैं, आज की डेट में उनका पे बैक 1.5-2 साल पे आ चुका हुआ है। सो मेरे ख्याल में डोमेस्टिक पे बैक इस वक्त बहुत ज्यादा भी एक्सटेंड किया जाए तो 2 से 2.5 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाती है। अभी इसको मैं विदाउट इन्फ्लेशन बात कर रहा हूँ, जिस हिसाब से एनर्जी यूनिट की इन्फ्लेशन चल रही है, ये यू नेवर नो, ये 1.5-2 साल में इन्वेस्टमेंट जो है वो जो है अपना ROI कंप्लीट कर ले। All right, Nazifa, our question is about financing schemes right now. State Bank की जो refinancing scheme है, उसके वाले से थोड़ा सा बताएं. I believe you have done a lot of projects. आपके काफी सारे ऐसे projects हैं जो State Bank financing scheme के हुए अंदर साथ हुए, and you are involved in it. So, a bit of your Exactly. comments upon the refinancing scheme. सो अब जनरली हमारे पास जब भी कस्टमर्स आते हैं, सो देयर इज अ लिटिल मिसकंसेप्शन कि जो रीफाइनेंसिंग स्कीम है दैट इज ओनली फॉर द बिग इंडस्ट्रीज। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो स्टेट बैंक की वेबसाइट पे भी अगर आप जाइए, या यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट, सो उसके ऊपर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और इसके हवाले से वो अवेलेबल है। एंड उसमें आप देख सकते हैं कि फॉर इंडस्ट्रीज, कमर्शियल एंड इवन फॉर द रेजिडेंशियल सोलर भी आपके पास फाइनेंसिंग ऑप्शंस मौजूद होती हैं। एंड अगेन उसमें डिफरेंट बैंक्स हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बैंक्स, अब जो प्राइवेट बैंक्स हैं और गवर्नमेंट बैंक्स हैं, वो सबके साथ जो हैं वो इस तरह रेलिवेंट वर्किंग करते हैं। ऑब्वियसली द परसेंटेजेस जिसके ऊपर आपको जो है वो फाइनेंसिंग मिलती है वो डिफरेंट है। सो उसकी डिटेल वर्किंग और उसकी डिस्कशन जो है वो हम कर सकते हैं। सो येस, इट इज़ आई थिंक अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी हर एक के लिए। ये बिल्कुल ऐसा ही आसान है जैसा आप अपनी कोई गाड़ी लीज कराते हैं या आप अपनी कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट्स पे लेते हैं। सो वो एक बड़ा चंक जो आपको लगता है कि शायद आप उसको पे नहीं कर पाते, आप उसको इस फाइनेंसिंग के हेल्प से जो है कर सकते हैं। आई थिंक अभी लेटली ही ये रीफाइनेंसिंग स्कीम जो है ये एक्सटेंड भी हुई है, बिकॉज देयर वाज अ वेरी बिग क्वेश्चन कि ये एक्सटेंड होगी या नहीं। बट आई थिंक कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ द आवर कि अभी जो करंट सिचुएशन है और अभी इतनी टैप जो है वो हमने मार्केट जो है वो उतनी नहीं की उस हवाले से फाइनेंसिंग में भी। सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप इसको जितना जल्दी पॉसिबल है उसको ग्रैब कर लें। और आप रिस्पेक्टिव बैंक से भी ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड आई थिंक the sessions like these, and we will definitely have a very detailed session on this bank financing working also soon. All right, Sasan questions answer करते चले. Maliha Samini is asking why not military is shifting to solar. Military is shifting to solar, Maliha. We are also engaged in doing so many projects which are based upon this particular working as well. जहाँ नजीफा ने जिक्र किया था about job market being created, we had Hifza asking a similar question. Sorry, Aman was asking this question that I saw कि जी job market के अंदर what is it like for solar? So I think Nazifa will also intimate that there are many job positions which are currently open also at DSG. And just to answer this, how if anybody would like to work at DSG, what happens, Nazifa? What's the easiest way forward? The very easiest way forward is the number आपको नीचे स्क्रोलिंग पे जो है वो नज़र आ रहा है, एंड ऑल्सो द वेबसाइट ऑल्सो। आप इसी नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड बहुत इजी प्रोसेस है कि www.dsgenergy.com.pk पे जाएं, देयर इज़ अ करियर्स टैब, वहाँ पे आप हमारी अभी करंटली 4-5 पोजीशंस ओपन हैं, आप उसको देख सकते हैं। डायरेक्टली आप वहाँ पे अपनी CV सबमिट करा सकते हैं। एंड अगर ये सारे मीन्स भी आपको समझ में नहीं आते, सो वी हैव आवर हेड ऑफिस इन तारिक ब्लॉक गार्डन टाउन, सो आप आके अपनी CV भी ड्रॉप कर सकते हैं। सो आई थिंक जब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हों, तो अगर आप उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे तो डेफिनेटली गलती जो है वो आपकी है। No, that's absolutely right, Ji. So anybody who's interested, Nazifa has shared website dsgenergy.com.pk. That's what we are looking at. Zain, now very important question is, मैं closing की तरफ आ रहा हूँ of this webinar today. We just got 5 minutes left, so I will go to the closing remarks for everybody. साद अहमद का भी क्वेश्चन है, हमारा भी सबका एक क्वेश्चन है कि why doesn't Pakistan tap its solar potential completely? प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, हम क्यों नहीं टैप कर पाते? व्हाई इट्स स्टिल आई डोंट थिंक हम उस शायद सिनेरियो से बाहर आ चुके हैं. इट्स नो मोर अ थॉट कि अब जी सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए, अब ये कंपल्शन हो चुकी है, लेकिन हम क्यों नहीं कर पा रहे? व्हाई आर वी नॉट एबल टू टैप कंप्लीट पोटेंशियल? व्हाट डू यू थिंक? सर आई थिंक इसमें काफ़ी ज़्यादा पार्ट जो है दैट हैज़ टू गो विद द UST.
because most of the products that are used in a solar power plant or renewable energy power plant, चाहे वो wind का भी even हो, तो उसमें mostly products जो हैं वो सारे imported होते हैं, especially considering solar panels and inverters, which constitute around 60-70% of a project value. Those are directly being imported. Now, given the fact that we are going to do a project, let's say 6 months from now, maybe a 15, 20 megawatt or 100 megawatt project, all the financial analysis that has to be done before the closing of the project is based on a certain value. और उसके ऊपर अगर हम देखते हैं आज से 6 महीने बाद की अगर चीज़ों को देखते हैं तो हमें एक स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, पीकेआर को स्टेबिलिटी नहीं मिल रही. So financial feasibility of the project अगर आज के दिन में बनाते हैं, maybe it is not feasible 3 months or 4 months from now. So this is a huge impact. Secondly, some of the government policies do definitely hinder, but I do appreciate the fact that State Bank has renewed its financing scheme. कुछ पार्ट ये भी प्रॉब्लम है कि आजकल जिस तरह से सबको पता है कि पाकिस्तान में एलसीज नहीं खुल रही, तो एलसीज ना खुलना जो है वो एक बहुत एक मेजर इम्पैक्ट है, बिकॉज इफ द इक्विपमेंट और मशीनरी इज नॉट बीइंग इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान, वी कैन नॉट definitely we cannot put up solar power plants, renewable energy based power plants, or for that matter even the industries are suffering right now. So I believe this is a rough patch and inshallah we'll go through it. But as far as the fact is concerned कि पाकिस्तान ने अपना सोलर का पोटेंशियल क्यों नहीं टैप किया, I'd just like to update that Pakistan is definitely tapping its solar potential. We are one of the fastest growing nations when it comes to renewable energy, and I believe renewable energy के targets भी जो हैं वो सबसे जल्दी हम internationally जो है वो achieve करेंगे इंशाल्लाह. All right, that we will do. Just to give a thought on this. आम लोगों की अल्फाज में समझाने के लिए, if you guys understand, जब आप ऑयल इंपोर्ट करते हैं, कोयला इंपोर्ट करते हैं, तेल इंपोर्ट करते हैं, गैस इंपोर्ट करते हैं, ये सारी जो बिजली है या जो सारी चीजें, ये आप एक दफा इंपोर्ट करते हैं और जला देते हैं, उससे बिजली बनाते हैं, एंड दैट्स इट, इट्स गॉन. वाइल अगर आप उसी इंपोर्ट बिल को कॉन्टिन्यूसली कम करना चाहते हैं, आप सोलर पैनल्स इंपोर्ट करते हैं, और अगर आप उसकी इंपोर्ट अलाउ कर देते हैं, आजकल के हालात में भी मैं कह रहा हूँ, सो इवेंचुअली आप एक ऐसा प्लांट लगा रहे हैं जिसने 25 साल बगैर किसी रॉ मटेरियल के चलना है. सो इवेंचुअली वो आपके हर उस यूनिट को सेव करेगा, हर उस यूनिट की वर्किंग को सेव करेगा जो आप एक दफा सोलर पैनल्स की इंपोर्ट में जा रहे होंगे. सो आई थिंक इट्स अ कॉमन सेंस थिंग व्हिच आर big guns have to realize कि किस तरह it is very important to allow import of solar equipment, because it will eventually lessen your ऑयल मार्केट. क्या आपने फर्नेस ऑयल, गैस, इन सारी चीजों की इंपोर्ट के ऊपर भी बैन लगाए हैं, बट यू हैवंट डन इट. It is just to understand, otherwise another flood is in making for next year. Closing remarks, Asad, your teams are working, how people can get in touch with you, or your teams, how if they're thinking to go renewables, आप किस तरह ना सिर्फ सेल करें, but you're actually educating people. So tell us that how, if anybody wants to know about renewable energy and they have a thought, is there any scenario where they can get in touch, and what's the way forward, what's the easy way forward? जी, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम वी आर नॉट जस्ट हेयर टू सेल द सिस्टम, बट वी आर हेयर टू गिव यू अ प्रॉपर कंसल्टेंसी, एंड वी वुड सबसे पहले हम आपको अवेयरनेस देते हैं, प्रॉपर कंसल्टेंसी देते हैं, देन हम आपको सोल्यूशन जो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल होता है वो प्रपोज करते हैं. सो आप नीचे हमारा नंबर भी देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं, हमारी ईमेल एड्रेसेस भी देख सकते हैं. यू कैन कॉन्टेक्ट अस थ्रू ऑल दीज चैनल्स, और इंशाल्लाह हमारी जो भी रिस्पेक्टिव टीम है वो आपके साथ इन कॉन्टेक्ट होंगी. एंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, फ्रॉम योर, आपको एजुकेट करने से लेके एंड तक आपकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उस तमाम को हम जो है वो कैटर करते हैं. और मैं ये एडवाइस करता हूँ कि चूंकि हम तो फिर इस इंडस्ट्री के लोग हैं, सो मे बी ऑब्वियसली लोगों को एक ही पर्सपेक्टिव होता है कि यार ये तो इसी की तारीफ करेंगे. मैं चाहता हूँ कि आप अपने इर्द गिर्द लोग जिन्होंने सोलर लगाया है, जो इससे फ़ायदा ले रहे हैं, उनसे डिस्कस करें, उनसे पूछें कि आया उन्होंने ये इन्वेस्ट किया है तो उनको इसका क्या जो है वो रिजल्ट मिला है. तो जिस वक्त आप उनके मुंह से जो है वो सुनेंगे कि वाकई ये इसके रिजल्ट्स किस तरह से हैं और उनकी ज़िंदगी में वाकई अब जो है एक आप कह लें कि टेंशन फ्री हो गए हैं वो अपनी इस एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी से, तो उससे ये है कि आपको ज़्यादा और अवेयरनेस आएगी. और बाकी इंशाल्लाह हमसे आप रब्ता करें तो हमारी टीम तो जो है वो अवेलेबल है एनी टाइम. All right, that's wonderful. Nadifa, closing remarks. You have been doing a lot of awareness seminars. Abdul Basit Minhas ने भी मैं मैसेज किया, Uzair Hashmi has just messaged. So just your thoughts, closing remarks on the whole this climate change
specifically floods से अभी हमने देखे हैं such scenarios where दिल दहलता है ऐसे हालात देखते हुए कि हम नेचर के साथ खेलते हैं तो फिर क्या होता है. बहुत सारे लोग इसे नेशन से भी रिलेट करते हैं और कुछ ऐसे मिसमैनेजमेंट का भी नाम देते हैं. बट yes, I think we need to really look towards it. So what are your closing remarks on how do you see the future of renewable energy in Pakistan? आई थिंक अगर क्लाइमेट और जो फ्लड से रिलेटेड आपने बात की है उसमें एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंट है, दैट इज़ लैक ऑफ प्लानिंग. आई थिंक अभी भी फ्लड आया गुजर गया, लेकिन अगर इससे अभी भी हमने नहीं सीखा और हमने नेक्स्ट ईयर के लिए अभी से इसकी प्लानिंग स्टार्ट नहीं की, तो आई थिंक ये हर साल एक ऐसे ही जो है वो सैलाब और इसकी वर्किंग जो है वो हमें देखने को मिलेगी. एंड द सेम इज़ रिलेटेड टू सोलर ऑल्सो, कि आप प्रॉपरली प्लानिंग करें. जिस तरह हम जब भी सोलर से रिलेटेड अवेयरनेस सेशंस कर रहे होते हैं तो हम आपको बताते हैं कि इट इज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट फॉर अ लाइफ टाइम, कि आप अगर आज सोलर पैनल लगाते हैं तो उसकी 25 ईयर्स की वारंटी है. सो इट्स लाइक कि आपने 25 साल के लिए अपने आप को एक वो जो बिजली के बिल की टेंशन है उससे आज़ाद कर लिया. एंड अगेन जब हमने फाइनेंसिंग की बात की, हमने डिफरेंट और ऑप्शंस की बात की, सो देर आर वेज टू डू इट, सो देर आर वेज टू प्लान इट. आप आज से ही इसके ऊपर जो है आप यूट्यूब के ऊपर बेशुमार लिंक हैं, बहुत सारी कंपनी फ्रॉम DSG एनर्जी, सो आप किसी से भी लगवाना चाहें, बट आप उसके ऊपर प्रॉपर अपनी एक R&D करें और आप उस सारे सिस्टम को समझें. एंड ये जो एक ऑप्शन है इसको ज़रूर एक्सप्लोर करें और ज़रूर देखें. जहाँ तक DSG एनर्जी की बात रहती है तो there are many companies in the business and obviously we are here for the business, but हमारे लिए जो first priority है वो हमारा customer है. As we say that we are here to create the wow experience for our customers. So हम सिर्फ ये नहीं देखते कि हमने सिर्फ जाना है और सोलर सिस्टम लगाना है, हम उस सिस्टम को ओन करते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल सिस्टम हो या वो इंडस्ट्रियल सिस्टम हो. If you have any complaints, if you have any questions, we are always here to help you. And आप इससे रिलेटेड हमारे टेस्टिमोनियल्स और डिफरेंट वर्किंग्स भी देख सकते हैं. बट आई थिंक ये एक ऐसी मार्केट है कि जिसको टैप करना बहुत ज़रूरी है आपको अपने लिए और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए. All right, wonderful message, Zain साहब. मैं आपके पास closing remarks के लिए आऊँगा, especially for what you have all been sharing. But tell us some exciting things. What is happening? I saw on your social media ये आपकी बहुत सारी videos leak कर रहे हैं. I call this DSG leaks, by the way. There is this mega projects coming in. Your 39 teams are all engaged. Tell us a bit what's happening on the closing remarks. थोड़ा सा कुछ sneak peek तो बता दें. The next big thing in Pakistan DSE team is doing. So this is a project. I won't disclose specifics of the project, but like my post says, a mega solar project coming soon in Pakistan. ये चीज़ ज़रूर बता सकता हूँ जिस तरह से असद ने बताया था कि सफ़ायर की हमने एक स्टडी शेयर की है that we have been able to alhamdulillah successfully reduce the gas consumption on a gas-based generation. So this is a substantially big solar power plant coming soon, inshallah. कोई 5 megawatt का power plant है, and this will definitely impact. This will approximately impact 15 to 20% of the energy generation in that particular industry. So this is just one of the things that we are doing, and inshallah, or definitely her project of financial impact तो होता ही है, but this will have definitely a very good impact on the energy consumption of the industry, and eventually this will impact the climate change thing as well. एक चीज सर मैं बस एक चीज कहना चाहूँगा, especially considering the floods and everything that has been happening in Pakistan. I believe we are a nation. We need to get together as a nation. This is a high time. हम लोगों ने फ्लड्स में देखा है, और जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मसला हो जाता है, हमने देखा है कि पाकिस्तानी, हम एज अ पाकिस्तानी जो है हम चढ़ दौड़ते हैं उस काम के ऊपर. लेकिन आई बिलीव उससे ज़्यादा ज़रूरी जो ये चीज़ है कि अल्लाह माफ़ करे, इस बार तो हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है वो इंशाल्लाह हम देखेंगे फ्लड्स ना आए, उसके लिए हम कुछ करें और उसके लिए प्री प्लानिंग करें. नॉट ओनली फॉर क्लाइमेट चेंज, बट आई बिलीव दिस शुड बी a sentiment for every Pakistani, everyone in our heart, to do something for our future, not only for the next year, but for the coming generations as well. So over to you, sir. All right, that's something जैसे जैन ने कहा कि हमारी responsibility है, and for all the people who want to be part of the revolution, I always say कि एक revolution की बात होती है कि as a nation we prioritize our working, और prioritize करके फिर हम आगे लेके उसको चलते हैं. This is something which is very very important. So if you guys want to see the amazing work this dynamic team is doing, just use this hashtag DSG Energy PK and you will find out some amazing stuff
of what is happening in Pakistan. The amazing team which is turning around. Thank you very much, Zan. Thank you very much, Asad. Thank you very much, Nazifa, for joining us today. Our DSG webinar series will continue. I'd like to thank all three of you and an amazing audience who have joined us. Messages are pouring in, but I don't think I'll be able to take everyone's messages today. But thank you very much, everyone, for joining in. DSG webinar will take place every Saturday, alternate Saturdays. इसमें हम उसकी announcements भी करेंगे और बहुत सारी design department के हवाले से, you know, if there are vacancies happening, yes, there are. Just connect on the social media, and you will have lots of all the questions answered. Thank you, everyone, for joining in. Thank you for being part of the DSG learning series that we have, and we hope to see you all again. On behalf of the team, thank you very much. Thank you.